जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। सैटरडे आफ्टरनून है और जनरल नारायण हमारे साथ हैं। डीप स्टेट की कंस्पिरेसी है और चाहिए क्या जिंदगी के अंदर, थोड़ी सी बातें करेंगे। ये हो क्या रहा है, ठीक है। बैक एंड आपको पता ही है, अभी तो थोड़ी डिगिंग हुई होगी। एक दो शोज मैंने सर के साथ करा है, एक मैंने अपने आप भी थोड़ी सी बात करी थी जयपुर डायलॉग्स में। अब वो सब तो है, कुछ और चीजें भी हैं पीछे जो आज सर थोड़ी एक्सपोज करेंगे एज यूजुअल। तो guys, hold on to your seats and let's dig into this show. Sir, namaskar, good afternoon, welcome to the show. Namaskar, Jai Bharatam. Thank you, Adi. Really interesting to see how the flames are flickering down. बेचारे क्या करें? So these are the लोगों को ये बताना है कि जब आग बुझता है तो सीधे नहीं बुझता है, वो फ्लिकर होता है और फिर धीरे 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 बुझ जाता है। तो ये उस स्टेज पे पहुंचे हैं। क्या, क्यों, कैसे, अभी इसका विवरण में दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, जिसको मैंने कहा है भारत प्ले अगेंस्ट द ओल्ड डीप स्टेट। थोड़ा सा एक रिकैप दे देते हैं सर, जस्ट फॉर द पीपल जिनको ना पता हो। कुछ नहीं है, 2-3 दिन पहले छुतरी सी छोड़ी गई, भाई पन्नू को मार रहे हो आप। निखिल गुप्ता के बारे में सबको पता है। CC1 कोई एक हमारी तरह रॉ एजेंट है। जितना मैं रॉ एजेंट हूँ उतना CC1 भी रॉ एजेंट है, ठीक है। तो चलो इतना ये मान लेते हैं। 2-3 और कैरेक्टर हैं। $1 लाख में डील हुई उड़ाने के लिए, और यूएसए ने उसको पकड़ के रखा है। बंदा कौन है? ड्रग डीलर है। 3 दिन पहले मैंने सर के साथ हमने एक्सपोज किया था कि जो लॉ सूट लिखने वाला है वो सोरोस फाउंडेशन का है, ठीक है। ये चीजें हमको अभी क्लियर है, कॉमन नॉलेज है, इतना कुछ इसके अंदर सरप्राइज नहीं है। अब देखते हैं सर क्या लेके आए हैं। तो उसके पहले एक और कमेंट देता हूं मैं। चलो सर। हाँ, CC1 उस दिन बोला नहीं था, सो पार्डन माय लैंग्वेज। CC is a very common term used in NDA. it is given to a person who is known as चटक चूतिया। चटकी करता है और ट्रिप होके गिर जाता है, मतलब तो यही है। इन्हें जिसने बनाया है उसको मैं सीसी बोलता हूँ, जिसने भी ये कहानी रचा है सीसी बोलता हूँ मैं उसको जी। चटक एंड दूसरा चूतिया। सर, सबसे बड़ा सवाल मेरे को आपसे पूछना है, जरा बताइए सर, ये सैंक्शन करेंगे क्या हमको? मैं तो बोलता हूँ सर, एंड मैं ओपनली बोलता हूँ, दिस इज द थर्ड फोर्थ टाइम आई एम सेइंग दिस, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। आई वांट टू बी सैंक्शनड। आओ, लेट्स अगर लेट्स हमें टेस्ट द सैंक्शन वाटर्स। कर दिया तो उनकी इकोनॉमी टैंक कर जाएगी। आ उनको जाओ सर, पता है। मैं बोल रहा हूँ करो यार, मेरे को बहुत मन कर रहा है। आई ना, वांट टू बी अ सैंक्शन कंट्री। मेरे को ये ना वो जब मैं चाहिए। खत्म करूंगा तो उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं। चल, सो ये भारत प्ले अगेंस्ट द ओल्ड डीप स्टेट टू काउंटर यूएस गेम। ठीक है, तो क्या है ये? लेट्स डू अ रीकैप कि ओल्ड स्टेट हमने काफी बोला है, तो क्या है ये? कैन वी गो नेक्स्ट स्लाइड? या डीप स्टेट कौन है? ये डीप स्टेट ये पुराना एक हमारा टॉक था, हु कंट्रोल्स द लीवर्स ऑफ पावर, वहां से निकाला है। तो ये डीप स्टेट का एक हायरार्की है। ऊपर क्राउन काउंसिल है, 13 लिखे हुए हैं। आज के तारीख में 13 है, ज्यादा है, कम है, वो देखना है। बट इनका जो स्टाफ, इनके लिए जो काम करता है, मेन स्टाफ इज द कमिटी ऑफ 300, जिसके नीचे एक राउंड टेबल है, उनके नीचे स्टाफ, और ये ऊपर से पॉलिसी सेट करके डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, और मिस्टर जॉर्ज सोरोस जो है वो यहीं पे कमिटी ऑफ 300 का हिस्सा है। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने के लिए है कि चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थे, वो खत्म हो गए, वहां से उनके क्राउन को पैसे आ गया। तो ये पैसे हैं वो आदि ने आपने किया हुआ है हेज फंड्स के पास क्या क्या है।
क्लीन है, दो हिस्से अलग अलग हैं। एक है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विच इज नाउ नोन एज चैटम हाउस, और दूसरा है आपका राउंड टेबल। ये आते हैं कमिटी ऑफ 300 के नीचे, जिसके साथ आपका यूएन है, यूएस का नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस है जो सब कुछ रिकॉनेसेंस करता है। यानी स्पेस ले लो, लैंड ले लो, एयर ले लो, नेवी ले लो, सब तरफ, साइबर, एवरीथिंग। MI6 है। बिल्डरबर्ग, very interesting group. It began as a psychiatric institution, I think they all need and that. it has evolved into something which deals with subversion and information warfare. And it connects the North America, that is USA and Canada, with Europe. ये मिलके इसमें काम करते हैं। और इसके नीचे भी है I2S2, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज बेस्ड इन लंदन। ट्राइलैटरल कमीशन है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। ठीक है। देन you come towards the Chatham House, which looks at round table also. आप देख लो आपके ऑक्सफोर्ड के जो रोड स्कॉलर्स हैं, they are also controlled by these people कि उन्होंने किस टॉपिक पे क्या करना है, कैसे करना है। And these two, the committee of 300 and round table, along with not Bilderberg, it is Tavistock 1921, which began as a psychiatric institution. Bilderberg is essentially to manage the environment both in North America and Europe. Tavistock 1921 began then as a psychiatric institution and did a lot of work during the wars, that is First World War ke time, and slowly has graduated into information warfare, psychological warfare, subversion. And that is why you find a whole lot of institutions are under them. Tavistock, okay. Institute of Social Research, Princeton, Harvard, Stanford. देख लो हार्वर्ड में भी कौन, साइकाइट्रिक क्लिनिक। प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, सोशल साइकाइट्री। रैंड, CIA, ठीक है। रैंड इनके साथ एक और भी है, क्लब ऑफ रोम। ओके। Then you have MIT, Brookings Institute, Wharton School of Economics, Hudson. So जहां से वो information warfare, subversion of the people सब कर सकते थे, सारा करते थे। और इन्हीं के साथ कनेक्टेड थे मिस्टर लेट डिपार्टेड मिस्टर किसिंजर, हेनरी किसिंजर। ठीक है। और इसके नीचे आ जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसके ऊपर ऑलरेडी आदि ने excuse me बात किया हुआ है। Sorry about all those hedge funds which control them. Then world research control, population resource कहाँ से आते हैं, जो बाकी जगह से आते हैं, जिनको डेट स्लेव्स बोलते हैं। मतलब आप जाओगे तो आज भी वो आप देख लो, अगर एक कलर्ड पर्सन को लेके गए हैं, the money that he will be given will be lesser than what for the same job a white person will be given. The difference is there, will exist. ठीक है। So this is what is the deep state hierarchy which is getting churned कहाँ, committee of 300 और round table के अंदर, and as a result all your think tanks and all your major Ivy League institutions of US के अंदर churning होने वाला है। ठीक है। Next. Sir, allow me a second. Yeah, because क्या हो रहा है, ये चार्ट ना लोगों को दिख नहीं रहा। I am just recreating this file so that we can just hold it on the slideshow for a second. कई लोग बोल रहे हैं कि ये दिख नहीं रहा, क्लियर से तो नहीं मैं दिख रहा? आपको नहीं, तो मैं इसको स्मॉल मोबाइल तो दिखेगा नहीं। तो मैं अभी दोबारा ऐड कर रहा हूँ and I will just
आप कंटिन्यू रखिए इसे, मैं पहले ट्रायंगल दिखा दूंगा अबाउट फॉर 5-7 सेकंड्स एंड Okay. दूसरा वाला दिखा देंगे उसके बाद So, 5-7 सेकंड के लिए. Henry Kissinger is a very interesting character. Yeah. So Henry Kissinger is a very interesting character. Liked and reviled. Okay. Now, what we have to look at is when you revile him, you're looking at it from your perspective. He was doing anything and everything as part of his realpolitik to make sure that USA remained the superpower down through the 20th and 21st century तो खत्म हो गया, at least till he was alive. तो 50-60 साल के लिए उसका पूरा फोकस यही था. He couldn't care less if people died and wars took place and whatever happened. For him was the real politic, which unfortunately he looked at was the ends justify the means. उनका हाँ नजरिया वो था, करेक्ट. The ends justifies the means, which is not the way everybody else looked. So hence he was a much reviled figure. He was the one who opened up with China. But very interesting, next slide, 2014 में उसने किताब पब्लिश की, वर्ल्ड ऑर्डर. उसमें 2 प्रेडिक्शन उसने किए हैं. दिस इज द बुक, वर्ल्ड ऑर्डर. 2 प्रेडिक्शन उसने किए हैं. इंडिया के बारे में पेज 208 में लिखता है, इंडिया विल बी द फल्क्रम ऑफ द 21st सेंचुरी ऑर्डर. This is talking of 2014. I think subsequently he must have added this because that is when the NDA government came into power, and he has written there that a nationalist government has come to power at that time. When he is talking about China and US ka relations with China, in page 226 he writes, US and China are the indispensable pillars of the world order. Matlab, he is thinking India is the base, the main fulcrum, over which the US and China will be the pillars for the world order. What went wrong for China? Today it's not even considered, it is considered as a dispensable pillar. Declining power. Kya change hua? So let us look at it. Next. This was under the garb of reviving China under the Communist Party. The crux of the Chinese strategy is the China dream to re-establish the Middle Kingdom of Tianjia. Now this, I am surprised Henry Kissinger wrote in this book that it will be the pillar, because he also said that this is, he has also mentioned the same thing उसके किताब में भी कि भाई ये करने वाले हैं, and they feel that everything revolves around them. If everything revolves around them, how can they become a pillar of the world order? Because their concept of the world order, whatever I have studied, is based on Chinese characteristics for China's sustained prosperity. चाइना में क्या चलेगा? करेक्ट कि भाई चाइना में क्या चलेगा नहीं, जो कुछ भी होगा वो चाइना के तरक्की के लिए होगा, पैसा चाइना को आएगा, बाकी को भीख जो कुछ हमने देना है हम दे देंगे, विच इज वेरी एविडेंट. अभी जितने भी बेल्ट एंड रोड के इकोनॉमीज देख लो क्या हुआ है. अब ये नीचे एक पिक्चर है, उसमें 2 एक ऐड भी कर सकते हैं. 1999 से शैडो इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर दिया था उसने, जो भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टिंग थे. फाइनेंशियल कंट्रोल वाला जो इंस्टीट्यूशन सारा बता रहे हो आप, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डीप स्टेट में है, उसी के पैरेलल आपने बनाना शुरू कर दिया था कि इसको तोड़ के मैं ये बनाऊंगा. तो he has been systematically working to realign the international order towards himself, parallel structures. And जब भी न्यू ऑर्डर आएगा तो ये होगा, आपको पैसे नहीं जाएंगे. So that is a challenge directly to the Crown Council.
bulk of the money which is going around here everywhere, जो ये financial control की बात कर रहे हैं, quite a lot of it comes from the Crown Council. आप ये बोल रहे हो कि आपके पैसे सब लेके मैं अपने पास रखूंगा, मैं पैसे कंट्रोल करूंगा. That is the reason, main reason why I feel he had to be put in place. And how? भाई उस वक्त तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, धीरे धीरे वर्क किया. जैसे ही बिकेम एग्रेसिव, हाय तौबा होना शुरू हुआ. एंड thanks to the Wuhan COVID virus, the complete global supply chain was affected, and he's gone. Correct. That helped pull the rug from under him. And आज तक उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं. अब जितना भी वो करवट बदले, उनको पता है कि इसने जो करना है, सारा पैसा चाइना को लेके जाना है. और like we had discussed earlier also, कि क्राउन काउंसिल से मतलब नहीं है कि वर्ल्ड का गवर्नेंस मॉडल क्या होता है. उनको अपने पैसे से मतलब है, पैसा ग्रो होते रहना चाहिए, हमको लॉस नहीं होना चाहिए. यहां तो पैसा ही खत्म हो जाता. So yes, the global supply chain got affected, and so they had to do a lot of variation so that to diversify the global supply chain. लेकिन Xi Jinping और चाइना को भी had to be given a lesson, and I think they have been given a lesson. So next, where is Bharat versus India? Remember what I had told you, कि उसने बोला था India will be the fulcrum. Right? So the deep state at that time, what he was talking of, preferred a subservient but strong India as its future fulcrum. But भारत को subservience मंजूर नहीं है. इंडिया को शायद होगा, भारत को नहीं है. Strategic autonomy, voice of global south, and to make sure that global south is not exploited. Global south is that debt slave and everything. So, but what is benefiting Bharat is, Bharat unlike China is not seeking a new system. वो सिस्टम नया नहीं बोल रहा है. अब जब मैं सिस्टम बोल रहा हूं तो इंक्लूडिंग द डीप स्टेट, ऑल भारत इज सेइंग modified structure that is in line with 21st century geostrategic environment. Indirectly saying ये तुम्हारा leftist Islamist agenda है, कूड़ेदाने में डालो. That is not the geostrategic environment of 21st century. And bulk इनका survival सारों का leftist था. And the other one which you are saying is Vasudhaiva Kutumbakam. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. That means you will not exploit the global south. The global south should also benefit economically and develop. So this is Bharat ka stand. So what is the evolving challenge now? Next. एक सवाल पूछूं सर मैं यहाँ पर? आप प्लीज. सर ग्लोबल साउथ में भी मोदी साहब ने जो 10 पॉइंट्स रखे हैं, यू नो, जिन 10 कमिटीज बनी हैं ग्लोबल साउथ के समिट के अंदर, एंड जिसका वो साथ आगे चलने वाला है, तो ये क्या आप एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप ही फॉर अ सर्टेन सेगमेंट? That is a counter to the UN. UN is also controlled by the Committee of 300. Committee of 300 जो स्लाइड देखोगे उसमें UN भी आता है, and all is arms, all its arms and other things comes with that. So here you are telling that the UN should do the job what it is supposed to do. So we are creating these committees to tell the UN कि उनको चाहिए क्या. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आगे चल के लैटिन अमेरिका, अफ्रीका सब हमारे साथ हो जाएंगे, तो we can manage from here. So this is also telling them that your leftist agenda के साथ जो तुम UN को कंट्रोल कर रहे थे and exploitative agenda के साथ, let's start putting an end to that. See, थोड़ा बहुत आवाज उठा था वो निजेर वगैरह के कू में, उसके बाद कोई शोर शराबा हुआ है? नहीं.
So that is what is India's stance. You're seeking a modified structure. Even within the UN, you want a modified structure, which is in line with the 21st century evolving geostrategic environment. Reformist. सेम थिंग इज आपका जो डीप स्टेट का स्ट्रक्चर है कि भाई साहब आपके जो कमिटीज बने हुए हैं, कमिटी ऑफ 300, राउंड टेबल, फाइनेंशियल, नाउ स्टार्ट मॉडिफाइंग दैट टू सूट दिस स्ट्रक्चर. एंड उसमें आई विल से दैट द वीकेस्ट लिंक आई फाइंड देयर इज द कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स. That was put in place to control the Canadian politics, and that is the weakest link today. So, आगे चल के will that fall out and will ICWA come there? अपना Indian Council of World Affairs remains to be seen. What comes? RIS or ICWA, I feel, is well there in the position to, because we are looking at geostrategic and geopolitical level decision making. ICWA, I think, would be well positioned, well positioned and set to go there. ठीक है, seasoned diplomats and others, geostrategic sphere के जो बंदे हैं वो वहां पे हैं. So that would be could be a shift. I'm not saying it will happen, but if it happens, then this is one shift that could take place. Next come अभी हमारा evolving challenge क्या है? हम जो भी देख रहे हैं अभी, जैसे ये जसविंदर ने बोला, निखिल गुप्ता को पकड़ा, प्रॉब्लम ये है, ये ओल्ड स्टेट मेंबर्स हैं जो कमिटी ऑफ 300 में है या राउंड टेबल में है, उनको पता है कि अब हम न्यू ऑर्डर में नहीं होंगे. थोड़ा बहुत sputtering help from others who may be there, but who prefer a subservient India over a strategic autonomy Bharat. But to those who are likely to continue, who are not deeply leftist, it is slowly dawning on them that India will not be as strong as Bharat. जो मेरा शो देख ले, जिसको डाउट है, आपके साथ किया था हिंदुस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस भारत. आपने बड़ा सर आराम से बोल दिया, बट बड़ा डीप स्टेटमेंट है. इंडिया विल नॉट बी एज स्ट्रांग एज भारत. Because India is seeped in with your separate, the leftists and the Islamists. India is the one written by our mainstream historians. Yes. जी, who are steeped with leftists, who are deep leftists. नाम भूल जाता हूँ मैं, sorry, but हाँ, I don't think they're big enough for me to remember, and I'm trying to be a little boastful here, but तो इंडिया वो है. Yeah, India वो है, and it is controlled by leftists. Bharat is not controlled by leftists. So, and India is the one who signed the people of India who were there as part of India were the ones who signed the agreement with China, 2008. People's Republic of China. As a party. CCP. वही, sorry, correct. CPC के साथ. Communist Party of China and the party, they signed an agreement. So, it will not be as strong. He'll be too subservient. And धीरे धीरे अभी जो उभर के आ रहा है, when you see it at the larger level, like Elon Musk, what we discussed earlier, is coming out stronger than George Soros and gang. So it looks like maybe Elon Musk may replace slowly George Soros. I think Belinda Gates may gain more strength than Bill Gates. Bill Gates भी sideline हो जाएगा. Because you cannot forget the kind of statement he had made of people who don't contribute should get eliminated. He's alleged to have made that statement when people were talking of population control and other things.
So it वैसे भी seems सर the उसको कंट्रोल करना इजी है ना, जेफरी एप्स्टाइन का कुछ टक करोगे, yeah, बिल गेट्स बैठ जाएगा that's वहीं why I पे। said slowly you will find Belinda Gates. She is separated from him, so जी she will gain more prominence than Bill Gates. So it seems that, like I said, Crown prefers कि ये ठीक है, modified structure under a strong भारत मतलब मेरे पैसे safe है, and the evidence is like earlier show में भी आपने बताया था, ये Vanguard, BlackRock वगैरह shifting base from China to India. या So you will also witness a push against the leftists, and gradually you will see more and more support for Bharat. So you may find this Nikhil Gupta thing and other things just petering out. वैनिशिंग। In the case that एक छोटा सा शुरला भेजा है, I think yesterday I read it in the newspaper, e-newspaper, internet में पढ़ा था, where the MES spokesperson had made a mention, it's a leaked thing to the paper, उनके जो प्रेस में बात करते हैं कि Canada keeps talking of cooperation in this Niger case. Our team has been asking for visa to go there and help cooperate with them, वो visa ही नहीं दे रहे. Right. So in the same way we had done, वो charge sheet कैसे बना था, laughable. Nikhil Gupta case will also fall down, and maybe the newer guard who are going to be part of the newer state may have done some things to draw these people out to see who are the ones who jumped the gun and be able to identify and slowly sideline them. Okay, so comes some food for thought, लोगों को सोचने के लिए. Next. So in this backdrop, do you still think Bharat is under pressure? हमारे जो त्रिमूर्ति उनको कभी देखा है? Do you see they're under some tension? त्रिमूर्ति में बोलता हूँ मोदी, शाह एंड जयशंकर. सर वहां तो मेलोडी हो रही है तो मस्ती कर रहे हैं वहां पर. So like I said, these are the last flickers. Both of them are trolling two countries together. Yes. पूरे देश. So they are trolling the leftists in their country. You can imagine, yeah. Absolutely. On a serious note, yeah. So the leftists the world over, they are slowly finding that their relevance is finishing. So nobody will go down without a fight, यार. So ये चीजें आपको यही सोचनी है कि ये होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कई हमारे इसमें भी कहते हैं, हमारे स्कूल में भी पढ़ाया था, इट्स इजी टू डिस्ट्रॉय, डिफिकल्ट टू क्रिएट. अगर कोई सिस्टम को तोड़ना है तो दूसरा सिस्टम एंड्योरिंग इन प्लेस होना चाहिए कि इसके बदले है तो ये है. She and PRC, they tried to break a structure without creating an enduring alternate structure, because the दूसरा alternate structure is already faltering thanks to the debt BRI scheme. अब वो faltering structure है and you wanted to break an existing structure कि सारा कुछ चाइना के पास आएगा, तो थप्पड़ तो पड़ना ही था. Second thing, as it is emerging now from over the last decade, it is Bharat which is now playing the long game, marathon. शी ने तो डेंग शॉपिंग के मैराथन को तो स्प्रिंट में कन्वर्ट कर दिया, मुंह के बल गिरी, या फेल हो गए. There are a lot of things on social media में भी मैंने पढ़ा है. I think 1 or 2 papers have also written out that she actually went with, when everybody was talking कि वो जा क्यों रहा है एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के लिए, he actually went with a begging bowl. उसको 800 बिलियन चाहिए, उसको मिला नहीं, अपना समूह लेके आ गया. जैसा छोटा भाई वैसे बड़ा भाई. छोटा भाई पाकिस्तान, बड़ा भाई चाइना, शी जिनपिंग, दोनों बेगिंग बोल लेके अब जाएंगे. बिकॉज one of the things which
I came to know when I was going through the internet on China, मैक्सिमम ऑर्डर्स और काम इनका जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता था, whole lot of packaging industry, and most of the Christendom world used to, the factories used, the companies and all used to place orders for them for packaging for Christmas, and work used to start around end August, September and carry on till the beginning of November. अब की बार कितने ऑर्डर मिले? अंडा अंडा zero. So you can imagine all these companies which were depending on these orders, and they used to make a killing on those orders कि अगले सीजन तक उनका काम निकल जाता था. बट there were others also who used to order. अभी सब खत्म ही हो गया है जी. That is why I say converted it into a sprint and failed. So शिरडी साई बाबा का वो कहते हैं श्रद्धा एंड सब्र. क्या है? हैव फेथ एंड बी पेशेंट. उनके साथ ऐड किया है मैंने, फेस दिस चैलेंज विद इक्वानिमिटी. हड़बड़ाहट में मत जवाब दो यार, बी मैच्योर एंड यू विल विन द गेम. डोंट वरी, यू विल विन द गेम. ठीक है, अभी आप देख लेना, मे बी न्यू ईयर्स गिफ्ट में आएंगे ये 8 सेलर्स वापस. दैट विल बी द नहीं, वो सर वो 2-3 जो हमने वो तारें खींची हैं, पहले ये खत्म कर लूंगा, फिर तारों पे बाद में बात करेंगे. ठीक है, चलो अभी तेरे कोई क्वेश्चन हो तो बता. हाँ, वो अब मेरे को आई वांट टू स्टार्ट द वायरिंग जो हमने. अब क्या है ना गाइस, व्हेन यू चेंज समथिंग, यू हैव टू चेंज द सर्किट बोर्ड. ठीक है, मैंने ये नया माइक लगाया, मेरे को अपना सर्किट बोर्ड चेंज करना पड़ा, तारें नहीं लगानी पड़ी, तब जाके कुछ होता है. तो सर पहले आते हैं ये एंग्लो सैक्सन्स पे. ठीक है, एंड आई वांट टू टेक 3-4 प्लेसेस: एंग्लो सैक्सन्स, चाइना, रशिया, कतर एंड लार्जर मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. नेबरहुड में तो हमने ऑलरेडी कर दिया. एंड गाइस, लेट मी से दिस, आई एम गोइंग टू से दिस वेरी क्लियरली. नेबरहुड पे म्यांमार में जो चीजें हुई हैं, मैं कभी ऐसा नहीं बोला, बट आई एम गोइंग टू से दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. डेफ टॉक्स वाज द ओनली चैनल दैट पुट आउट द राइट थिंग, कर्टसी टू जनरल नारायण. जो सेल्फ सुसाइडल चीजें निकली है ना बाकी हर जगह से, ओहो वी आर फिनिश्ड, ओहो वी आर फिनिश्ड. बॉसी, म्यांमार गॉट हैंडल्ड. द लार्जेस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप came down and put their arms and said, boss, maaf karo, let's work together. Khatam. And we called it on Dev Talks ki, boss, this game is over, it's finished. And exactly that happened. So sir, my congratulations to you right there first. अब आते हैं सर एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड पे. एंग्लो सैक्सन to me now doesn't include England. England is Anglo Saxon game is over. Only US is left. US and Canada चलो मान लेते हैं. Also, Canada also, I told you, is the weakest link. Yeah. So now the Canadian Institute of International Affairs may fall out of the Committee of 300. Australia, New Zealand, in any case, were addendums. It's the North American continent. North American continent, maybe Canada will now stay as an addendum equivalent to what Australia and New Zealand are. And UK तो अभी क्या बोले, कब तक इंग्लिस्तान बनेगा पता नहीं. कब तक यूके है वो मुझे नहीं पता, कि सिर्फ के बचेगा उसका. आई डोंट नो, पता नहीं अब कितना बचता है, क्या होता है. बिकॉज द मोर एंड मोर यू फाइंड द Islamists and others coming out and leftists coming out in England, you may find that people in Scotland suddenly start talking of, that it will gather momentum that let us break away from England. And if Scotland breaks away, it becomes difficult for England to control Northern Ireland. The Northern Ireland may merge with Ireland.
and that leaves you with England, Scotland and Scotland, Wales कब तक रहता Wales. है? It depends on Wales. But the troubled portion is the mid England or the middle patch of the island, which is old name is Northumbria. And that is where bulk of your, that is the area of Birmingham and all that, where the bulk of your Islamists are. Leicester, Birmingham. Let's go to something now what we are doing. देखिए मैं कब से बोलता रहता हूँ कि लेवरेज क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर. कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है. नोबडी इज योर बेस्ट फ्रेंड. You have to create a hook and you have to create a leverage so that when the other guy tries to do something, he should know, oh, no. If I do this, it will hurt me. We picked up one person, sir, called Mandeep Singh. ठीक है? Mandeep Singh, ladies and gentlemen, and I'm saying this to you, he's a Canadian citizen. ठीक है? Khalistani. Rewind. Khotestani. And a close associate of निज्जर. उसको आपने उठाया है कल लुधियाना से. तो ये क्या है सर? He is what now? Master spy of Canada? We can say that he is going to spill the beans here. अब आप known terrorist and known drug डीलर के स्टेटमेंट को लेके चार्जशीट बनाते हो, तो हम नॉन खोतेस्तानी एंड सपोर्टर ऑफ ऑल दीज पीपल का लेके हम अपना चार्जशीट बनाते हैं. आई एम श्योर वील मेक अ चार्जशीट बेटर देन द स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ व्हाट दीज पीपल डिड. सर आप एंड देन ऑटोमेटिकली जसतिंदर सिंह अलोंग विद दैट, जैसे मैंने कहा ये लीक निकला कि साले हम तब से मांग रहे हैं, हमको आप वीजा नहीं दे रहे हो. एंड देन ये बोलेंगे इसलिए वीजा नहीं दे रहे क्योंकि ये उनके गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो उसको उठाया हमने. Now we picked him up. That is why you notice also कि यूएस में आफ्टर दैट 2-4 बोलने के बाद अभी सब चुप हैं, क्योंकि you know that, like I am saying again and again, Canada is their weakest link today. And you hit it. अब एक तो गुस्से भी हैं सब उससे कि फाइव आइज वालों को बोला और इन्होंने मना भी किया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया. कनाडा जाके उसने जसतिंदर साहब ने पार्लियामेंट में बोल दिया जिस चीज के लिए मना किया था यहाँ पे उसको. एंड यू कुड सी बाइडेन जी हैरेंगिंग हिम विद हिज फिंगर पॉइंटिंग एंड स्कोल्डिंग हिम. वो जाके उसने कर दिया वहां पे कुंडा. So that's why I say in the future scheme of things, Canada, like Australia and New Zealand, is going to be an addendum. ठीक है, तो आपने एक लेवरेज खींच लिया वहां पर. आपने एक लेवरेज बना दिया कि भाई आप खींचो निखिल गुप्ता को, हम मनदीप सिंह को सीधा करते हैं यहाँ पर. लेट्स सी वेयर दिस होल थिंग गोस. मजा आएगा इसके अंदर. There is a difference. निखिल गुप्ता को उठाया है, मतलब I am quite certain, I could be wrong, but I am quite certain ये इनके DEA का एजेंट रहा होगा. 100%. उन्होंने बोला होगा चल उठा ले, ये बोल देना, उसने बक दिया पूरा. यहाँ आपने उठाया, ये आपका बंदा नहीं है, वहां का बंदा है. So we have a Chinese follower here, Xiao Hui. I'm sorry, Xiao Hui, if I'm mispronouncing your name. I don't know Mandarin, but this person says, honestly, I expected stronger action against India. I was surprised. Well, and let me take this one if you don't mind. So we know how to play the game better than you, my friend. Learn from us. You know, one of your prime ministers in the 1950s has actually said stronger this. action for what? For what? Yeah, okay. For what? हमने क्या किया है जो तुम स्ट्रॉन्गर एक्शन बोल रहे हो? तुम्हारे जी जिनपिंग की तो इतनी फटी हुई थी, डिस्पाइट यूएस ओपनली असैसिनेटिंग अ जनरल ऑफ ईरान. ईरान तुम इतना बोलते हो. डिड यू टेक अप अ केस इन द यूएन, हैंडसम, against the serving generals and everybody in US that you have murdered a serving general of Iran? Also in a third country? You didn't? और हमें बोल रहे हो strong action for what? हमने तो कुछ नहीं किया यार. These are actions of unknown gunmen. We don't know who they are. Who they are?
It can be me on my off time when I'm not doing नहीं, it videos. I can be go. इंटरगैंग राइवलरी देयर आल्सो यार. वो ड्रग पे Can be सारा anyone. चलते हैं, ड्रग्स के तो इंटरगैंग राइवलरी चलता रहता है. So can be you also who has your. I don't know. It can be anyone. So we don't know what's happening, but you point a finger at us. There's going to be problems. That's what we've done. So ये Anglo Saxons का आपने hook निकाल लिया, and funny thing is sir, no mainstream media has picked it up. Nobody. वो अभी तक पुराने स्टेट के साथ पैसा चल रहा है ना उनका. या हमारे बंदों ने बोला होगा कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और, अभी तो कांटा फंसा है, उसको थोड़ा घुमाने दो हमें. And Karabi Kab, when did they do it? The day Modi Saab sits in the aircraft. He Going sits in to the aircraft. Mandeep Singh gets picked up. Fantastic. Okay. I mean, they say timing is everything, but let's come to Russia. एपीएस भी तो है. अभी मनदीप और एपीएस को साथ बैठा के बात कराएंगे. आजा बेटा चाय पिए. चाय वाले की चाय पिलाते हैं तेरे को अभी. Yes. Okay. Let's talk about Russia, sir. How do you see Russia, sir? Because बीच में Russia tried to, play a game. What's happening with Russia and Bharat right now? Russia and Bharat, Russia tried to get a bit smart. I think I would rather say Lavrov tried to get a bit smart. Lavrov, I think, is pitching कि Putin के बाद मैं बन जाऊंगा. But it has failed quite badly. You are trying to deal firstly with a two-faced person, known two-faced person for decades. पाकिस्तान को आप तेल देना चाहते हो, and you know fully well that he is sending war material to Ukraine. And you know his two-facedness, that while on the streets he is shouting against Israel for Hamas, he is sending 155 ammunition, artillery ammunition to Israel. तो पैसे के लिए तो वो किसी को भी बेच देगा, माँ को भी बेच दे, बाप को बेच दे, किसी को बेच दे. उसके साथ आप डील करने गए थे विज़ावी इंडिया. एंड इंडिया को बोल रहे हो कि नहीं, रुपीस से मैं क्या लूंगा आपसे, क्या नहीं लूंगा. अब आपको मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि वेनेजुएला से भी आपको तेल आएगा, इराक से भी तेल आ रहा है आपको, और ईस्ट अफ्रीका से भी तेल आएगा आपको, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से. नाउ यू आर सडनली रियलाइजिंग, सो यू आर ट्राइंग टू, नहीं ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो. यानी आई थिंक रशिया for quite a while under Putin has been punching higher than its value. Russia has to realize that it is not Soviet Union, which had a global presence, because at that time there were a lot of communist countries around the world, and you had the military presence to do things all over the world. I don't think as Russia you have that capability. First thing, that has to be understood. Second thing, you're only controlling your near abroad that you say, especially the Caucasus and the Central Asian republics, through showing an overwhelming power over them. Given a chance, if they had the connectivity, they would have left you. That is where I keep saying that 9/11 gave one of the best chances for US and the West to draw out Central Asian republics from Russia's ambit, which they failed badly. Everybody wanted to come out of Russia's ambit. They were looking at economic development for themselves. They were looking at the US, West, the Japanese, the South Koreans to help them. Nobody helped them. India, people may not know, we sent out a helping hand to the
weaker countries like Tajikistan, Kyrgyzstan, we had people from our finance ministry delegated to their ministry, working with them, helping them how to prepare budget, how to manage your revenue. ये चीजें कर सकते थे, नहीं हुआ. Now look at what has happened between Nagorno-Karabakh, अपना Azerbaijan and Armenia. Was there a need to go to war? While Armenia has an enclave in Azerbaijan, Azerbaijan has an enclave in Armenia. You could have easily sat and sorted it out. वो अलग बात है कि Armenian enclave is much bigger than the Azerbaijani enclave, but you don't have to look at that as territories. Yeah? How will you survive there cut off? It would have led to a much better. लड़ाई लड़के सब कुछ होने के बाद अब आप बैठ के सुलह की बात कर रहे हो तो फायदा क्या हुआ? You think the people of Armenia are going to excuse you for that? No. That is the reason why they turn towards us and we are arming them. We are helping them. Okay. So while from the Ukraine war he will become stronger, the dichotomy and the problem मेरे हिसाब से जो रशिया फेस करता है, it covers the Eurasian landmass. So is he a European power or is he an Asian power? He wants to be a European power. He doesn't want to be an Asian power. So if he wants to be a Eurasian power, तो एशिया की तरफ क्या आ रहे? Europeans, do they want you to be with them? They don't. अभी तक they've only asked for your resources. आपके इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किसी ने एक ठेंगा तक नहीं उठाया जी. ठीक है, आपके रिसोर्सेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपसे रिसोर्स को खरीदेंगे. कितना सरवाइव कर लोगे इस तेल के साथ? 3 decades, 4 decades. By then the green energy would have come to 4. So the requirement of your fossil fuel will go down. फिर क्या करोगे? ऊपर से आपका डेमोग्राफिक भी वीक है, बहुत वीक है. अभी तो वो ओपनली कह रहा है लेडीज को कि प्रोड्यूस 8 चिल्ड्रन. We'll make you the hero of Russia. वो that is the old Soviet Union वाला. Those who produced over 8 children, they were given the award Mother of Russia. Now it's known as the hero. Now it will be called the hero. He wants them to produce 8 kids. Does he realize what 8 kids mean to the woman? In Soviet Union, from womb to tomb, they were looked after. तुमने बोला 8 बच्चे पैदा कर लो, 8 बच्चे पैदा भी कर लेगी. उसके टाइम में उसको पैसे भी मिलते थे, जहां पे भी वो काम करती थी, whether what in the community farm or in any of the factories and other places, she was getting her whatever those slips and all or money she used to get. In today's day and time, when you have gone more capitalistic, will any company pay her? So this is the other thing, because of the cost of, like China भी बोल रहा है अभी 3 प्रोड्यूस कर दो, ये 4 प्रोड्यूस कर दो. People are hesitating to have children, yeah, because the cost of living has become so high. Same is the case with Russia. So your demography is going down. How are you going to manage? So this is what now they, ठीक है, यूक्रेन के साथ जो कुछ भी है आपका जो होगा, it will die its natural death and you will control Donbass and Crimea. Then what? What next? He's got himself into a bit of trouble, actually. One of the things that I can, So now you got yourself into trouble. Not only there, you have angered the Caucasus. जॉर्जिया आपसे वैसे ही खफा है, आपने अब आर्मेनिया को भी खफा कर दिया. अगर जॉर्जिया आर्मेनिया खफा हो गए तो आपकी आउटरीच कमिंग देयर इनटू ईरान तो ब्लॉक हो गई. सर, I mean, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखा था कि रशिया he was depending too much on BRICS कि भाई BRICS से कुछ निकलेगा, कुछ करूंगा मैं यहाँ पर and all that. But कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि होगा नहीं, because
अगर ये सोच थी उसकी, देन आई एम सॉरी यार, ब्रिक्स एससीओ तो इज जस्ट अ साउंडिंग प्लेटफॉर्म है। या वो हुआ नहीं उससे, आई डोंट थिंक दैट अचीव्स हैपेंड। नथिंग। नाउ वो थोड़ा शिफ्ट बैक कर रहा है, बट इन एनी केस सर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। जस्ट बिफोर दैट्स माय लास्ट दिस थिंग, मिडिल ईस्ट में कतर के साथ तो ऑब्वियसली हमारा इशू है, प्लस ये वॉर चल रही है। आपको क्या लगता है सर, ये जो ओल्ड ओल्ड डीप स्टेट का जो पुश है इस टाइम पे इसराइल को पकड़ के रखने के लिए, प्रो हमास, मैं तो खुले में बोलना शुरू हो गया, आई हैव स्टॉप बीइंग डिप्लोमेटिक अबाउट इट। आज मैंने एक ट्वीट भी करा है सर, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप देखो एक वो 3-4 बंदों को बिल्डिंग से फेंक रहे थे नीचे बिकॉज दे आर इजरायलीज। See, the whole problem, see, this is what happens when you start a system, how the decay of the system takes place. You went into the leftists, you tried to take on the Islamists also on board with you to suppress certain areas from which you were wanting to exploit. Now, this is the extreme it gets into, which you don't know how to handle. And this has steeped into your system so deep. अब ऐसा आपने सिस्टम तैयार किया है कि only if a person is chanting these things can he come up. तो लिंक्स एंड पिंक से ऊपर आएगा तो मेरिट तो गया ना, मेरिट गया तो यू विल गेट एवरेज पीपल और बिलो एवरेज पीपल। एंड दिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसने चार्जशीट बनाया वो तो बिलो एवरेज से भी बिलो एवरेज है। मतलब एक सी ग्रेड हॉलीवुड फिल्म वाला तो स्क्रिप्ट इससे बेहतर लिख लेता है यार। ये 60s की फिल्म, सम अपना क्लोक एंड डैगर स्पाई टाइप 60s की फिल्म, 50s 60s की अपने हॉलीवुड फिल्म या बॉलीवुड फिल्म की दिखा रहा है यार। अरे क्या, and he expects, that's why I gave that na CC chatak chukiya, pardon my language, it is that yeah. Any worse than that So sir, abhi honestly ye I system has decayed, and it's to terrible. get out of this system, that's why I say itna jaldi nahi hoga ye, it will take its time. Hamas, maybe the people who founded Hamas and Hamas as a people's body may die, but it's an ideology. आप तो कितने डिकेड से बच्चों को यही सिखा के लेके आ रहे हो। How are you going to suddenly tell the kids now who are grown up now that what was taught to them is nonsense and it's not correct? It's not going to be easy. But they'll start quoting from whatever has been taught to them, from the books that have been taught to them, written by Islamic scholars. Then what do you do? What will the leftists do, who are having all the cake and sara kar rahe the? So that is the churn in the outer regions of your Middle East you find, because Saudi Arabia, Jordan, to a large extent Kuwait, UAE, Oman, to a large extent they have stabilized, even Bahrain. The problem areas I find are going to be Qatar, Iran, of course, if we take it into the Middle East, Iran, Turkey, Egypt, and of course the North African belt, where this kind of extreme Islamist fundamentalism thrives. That is going to be the problem. Which is the other place? It's going to be in Europe, Western Europe, where blindly you're brought in all these people. The basic issue, I will tell you, where they have gone wrong, is that capitalistic socialism, where a person doesn't have a job, the state gives them money, more the number of children, more the money. पढ़े लिखे लोग कोई काम नहीं कर रहे, औरतें भी पढ़ी लिखी हैं, काम नहीं करती हैं, काम उनका है बच्चे पैदा करना, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा मेरे को डोल मिलेगा. So they are living on free subsidies out there. One thing is to plug this. चलो अभी तक जो हो गया है आपने कर दिया, ये फ्री डोल आप बंद कर दो कि हर एक को स्टैंडर्ड आपको इतने ही पैसे मिलेंगे, 1 साल के लिए मिलेंगे पैसे. जॉब मिल गया ठीक है, जॉब नहीं मिला प्लीज गो टू एनी अदर कंट्री वेयर यू कैन गेट अ जॉब.
Otherwise, you're going to face this problem, and what the Dutch, that new PM is saying, that he's going to throw all of them out. It's not easy to throw people out also. जी. So these are the areas you will find in the next coming decades. It will be a big problem unless you change the environment, education, and this dole that you're giving. Education in these countries in Middle East and the dole that takes place. And for that, in the Middle East, Saudi Arabia, the royal family has to take control of the Wahhabism. That is the one which has taken Islam to the extreme. गाइज मेरे को दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स करनी है. सबसे पहले तो बहुत लोग डीप स्टेट का वीडियो जो हमारा ओरिजिनल है वो मांगते रहते हैं, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है. You can watch that video. जनरल नारायण के साथ हमने जो किया था, that is about almost 6-7 months ago. I think we were the first guys who actually spoke about the deep state. उसके बाद deep state बड़ा common हो गया. So I have just put that in the description. किसी को वो देखना हो वो देखिएगा. दूसरी चीज, let's get into your questions. हमारे पास करीब 1900 प्लस लोग हैं, बट यार लाइक सिर्फ 700 हैं. वो हाफ से कम. ऐसे थोड़ी आपको पसंद नहीं आया क्या हमने क्या बात करी है? जिसकी नहीं, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. क्योंकि आप इस चीज को तभी ऐसे स्प्रेड कर पाएंगे एंड मोर पीपल विल बी एबल टू गेट इन्वॉल्व इन द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर टॉकिंग. क्योंकि अगर आप इस पन्नुन, आधे लोग उसको पन्नुन बोलते हैं, इट्स नॉट पन्नुन, इट्स पन्नू, उसके बारे में आप आर्टिकल पढ़िए तो आपको ऐसा दिखेगा कि भाई भारत ने गड्ढा खोदा है, खुद ही जाके गिरा है, अब खुद ही अपने सिर पे मिट्टी डाल रहा है. दैट्स नॉट द केस. एक एग्जांपल मैंने आपको म्यांमार का दिया था, जहां पर हम लोग पहली बार हमने आके बोला था इस चैनल ने कि साहब दिस इज रॉन्ग, दिस इज प्रो भारत, रिलैक्स. एंड ये दोबारा बोल रहे हैं, दिस इज ऑल, नथिंग्स गोना हैपन, रिलैक्स. ठीक है. एंड आई एम अ वेरी बिग प्रोपोनेंट कि भाई हमारे को आके सैंक्शन करो, बट वो मेरी मानते नहीं है. तो बाइडेन साहब मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो मैं क्या करूं अभी. अब मैं बड़ा परेशान हो रखा हूं. ठीक है. सो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड आप लोग अगर मेरी नेक्स्ट जो मैंने बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर इज इंडो पैसिफिक एंड इंडिया. और इंडो पैसिफिक में तैयार रहने के लिए बिगेस्ट विक्चुअलिंग बेस इंडिया बन रहा है. इसीलिए आपके सारे यूएस के सारे जो डील्स वगैरह जो हो रहे हैं, आईसीटी के डील्स, आपके इंजन के डील्स, अभी स्ट्राइकर का भी डील होगा, सब कुछ हो रहा है बिकॉज आसपास के हमारे लिए उतना है, उससे जो बेनिफिट हमको होगा, लेकिन आसपास के उनके यूएस और उनके एलाइज जो है इंडो पैसिफिक में, वो ये ही सामान इस्तेमाल करते हैं. You will be the biggest MRO hub for anything and everything going here. सैंक्शन कैसे करेगा आपको? जी, मर जाएगा सैंक्शन करेगा तो. जैसे मैं बोल रहा था गाइस, मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है, और भी डिस्क्रिप्शन में यू कैन जॉइन द चैनल, या फिर आप सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स भी भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच. वी आर एट 800, 200 बचे हैं. प्लीज अपनी श्रद्धा, मैं आई एम नॉट आस्किंग कि कैसे टच होता है, प्लीज डू दैट सो दैट वी कैन इंक्रीज एंड रीच मोर ऑडियंस. उसका यही एक फायदा होता है, जितने लाइक्स होते हैं तो उतनी ज्यादा ऑडियंस engage करती है. Rahul Rakman ji, thank you so much. Given the speed at which information and influence travels today, would the civilizational cycle be shorter than 400 years? No, it's not a question of information, Lakshmanan ji, and influence. It takes time for your thinking to evolve. That is the reason why that 400-year cycle has been given. आप जो कुछ भी करते हो, there will be a response from the other side. Your own people's thinking has to change. So that's a generational shift in thinking. It doesn't happen overnight. जैसे मैंने अभी बताया आइडियोलॉजी, आप हमास ये इन सबको खत्म कर दो, लेकिन वो आइडियोलॉजी है जो बच्चे अभी सीखे हुए हैं, वो 40-50 साल के हो गए हैं,
वो उनके साथ जुड़े नहीं थे लेकिन उसी थॉट प्रोसेस के हैं, उनको हटा दिया आपने लीडर्स के, तो ये दोबारा आ जाएंगे लाइक अ हाइड्रा। जी हाइड्रा का किधर मारना था? द हार्ट को मारना था, तभी उसके हेड्स निकलते, नहीं आएंगे। इसका हार्ट क्या है? द थिंकिंग, द एजुकेशन। तो जब आप एजुकेशन करना सिखाना शुरू करोगे तो इट टेक्स अ जनरेशनल शिफ्ट ऑफ 30-40 ईयर्स। तो बच्चा जब 40 साल का हो जाता है तो वो उसके बड़ों को क्वेश्चन करने लगेगा कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ये तो ऐसा हो रहा है। जब तक वो काबिल नहीं हो जाता इस सोच वाले लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, ये सोच नहीं जाएगा। So it's a multiple generational shift. Ravi Malhotra ji, thank you so much. USA printed dollars and bought oil and goods. Now also printing? हाँ बिल्कुल, Absolutely. अभी Why तक तो not? डॉलर ही है। जो बोल रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड भाई, कोई डी या डॉलराइजेशन नहीं जा रहा है, बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर करेंसी विच इज कमिंग टिल सम अदर करेंसी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कम्स अप, you will have dollar, or everybody stops paper currency and goes back to the medieval times of having gold, silver and bronze coins. That won't happen. It could happen, but No, you may have paper currency linked like it was before Nixon broke it up in 68-69. You could have, but you need to have जितना पैसा आपका, जैसे कहते हैं अभी अपना 33 लाख रुपीस करोड़ रुपीस आर इन सर्कुलेशन, तो एज पर द करंट वैल्यू ऑफ गोल्ड उतना इक्विवेलेंट गोल्ड आपके पास होना चाहिए, देन लिंकिंग द मनी करेंसी टू द गोल्ड हैज मीनिंग। लाइक रशिया सेज आई हैव लिंक्ड माय रूबल्स टू द गोल्ड, गुड। Do you have as much gold as many rubles are there in circulation? If you don't have, it has yeah. no meaning. Because if you look at the IOU, it's an IOU. Your paper currency is an IOU of the government. And the government actually says कि उतना value gold आपको देगा. The bearer of this currency will be provided with this and this amount of gold. That is the whole issue. Yes, sir. Vishwajit Singh ji, thank you so much. Jan sir, namaskar. What is causing the churn in committee of 300? Isn't clear. It's in middle of pyramid chart and supposed to carry out work for the Crown Council. Okay, I'll just explain it in simple terms. अभी तक उन्होंने चाइना को लेके चल रहे थे कि वहां से पैसे बन रहे। शी जिनपिंग जल्दबाजी कर गया, मैराथन से स्प्रिंट कर दिया, एंड ही वांटेड टू क्रिएट अ अल्टरनेट सिस्टम जो इन्होंने बनाया था, where everything comes for the benefit of China. That means all money comes to China. इनका जो सिस्टम बना हुआ है, क्राउन काउंसिल को नीचे जिस तरह से गवर्नेंस चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। इनके पैसे जो भी सर्कुलेशन में थे ओवर 500 और ट्रिलियन और डॉलर्स, दैट शुड अर्न मनी। अब सडनली द चर्निंग इज कि भाई चाइना को सबक सिखाना है, तो जितने लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट उसके अंदर थे who are working with China have become, are losing relevance. That is the churn, because the committee of 300 is the actual one which executes things for the benefit of the financial benefit of the Crown Council. So financial benefit would have taken a hit if China was allowed to go down the path in which Xi Jinping was going. So he had to be taught a lesson. And so the complete thing changed and they identified, but पैसे तो बनने हैं ना, so the identified place is India and the other identified place was the global south. Now you are the voice of India, voice of global south, and that is why I say you are the fulcrum. धरा हो अब emerging order के, because आपने सारे committees वगैरह बना रखे हैं, how to ensure that global south is not exploited, they also benefit from whatever is happening. So you are the place. Now if you are the place, leftists and Islamists are very anti you, they have to go out. That is the churning, not just in the committee of 300, I would say even in that round table below it, and in all the think tanks and every place. Maybe the Indians will like to, Jaishankar ji might work out a structure below, वो debt slaves वो सब हट जाएगा, global south वाला,
and make a different name for that. So you will have the Crown Council, the Committee of 300, the Round Table, and then the rest of the people below who also benefit, whether it is resource, population, whatever it be, and they won't be termed as debt slaves. So let's see what churning happens. But ye do churning to ho raha hai. And if you looked at that, which I was explaining, kitne entities hain, all those entities also have embedded leftists and Islamists, वो भी निकलने हैं वहां से. That is the churn. तो अब वो जो थे वहां पे पैसे कमा रहे थे, काफी पैसे कमा रहे थे, जो उनके बॉस थे वो तो millions of dollars they were earning. George Soros, for example, now suddenly when they are going to become irrelevant, चुपचाप जाएंगे जी, शोर शराबा तो करेंगे. ये मैं आउट ऑफ टर्न क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग. आई थिंक इट्स द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द शो. आपके अगर मेरे पास एक क्राउन होता तो साहब मैं आपको दे देता. चाइना's GDP is $21 trillion. मैं इसकी यहाँ वो खुद 19 बोलते हैं, ये साहब 21 बोलते हैं. ठीक है, इंडिया GDP बस 2, एक नहीं है हमारी. That is the real difference. अभी तो वर्ल्ड बैंक ने जो निकाला था, आई थिंक IMF ने हमको तो 4 ट्रिलियन बोला. अजितेश जी, मैं सबसे पहले बोलूंगा यहाँ पर वो हुआज हुई है ना, हुआज हुई, कैन यू प्लीज गेट अजितेश अ चाइनीज वीजा, वी वुड लाइक टू स्टे देयर. अजितेश जी, हमारा इसके ऊपर हमने बात भी किया था कि चाइना का एक्चुअल GDP क्या है, जो वो खुद बताते हैं. इट इज लेस देन half of what they talk about, which is 19 trillion and reducing. So actually is in the region of somewhere between 8 and 10 trillion dollars is actual GDP, because since 2000, I think 16, they have been fudging the GDP by 2%. So 2% cumulative. Okay, it's a compound interest. Because 2% आपने पहले कर दिया, अगले साल फिर 2% कर रहे हो, तो it's a compounded interest. Just calculate your compound interest, deduct, and tell us what would be their actual GDP. It won't be around more than 10. And we are at 4 trillion, which is the official figures which IMF has just released, that we are already at $4 trillion. 4 and 10, what's the difference? अगर वो 2% बोल रहा है, फज कर रहा था, are we sure कि केवल 2 फज कर रहा था? So I don't go by what they say. Jyotish ji, thank you so much. Sir, do you think after Xi's visit to the US, why has problem started in China and now in the US? पता नहीं यार, लेके गया होगा कुछ ना कुछ. But this इतने लेवल पे US में नहीं हुआ है, जो China is quite bad. And they are thinking now of lockdown. Yeah. They're thinking now of lockdown. Yeah. Ravi Malhotra ji, do you feel viruses will dilute working manpower? In China, sir, yes. It dilutes working itself ना sir. Manpower तो छोड़ो, लॉकडाउन कर देगा तो वर्किंग ही नहीं हुआ. एंड आदमी बीमार है तो कैसे काम करेगा? But this, though a lot of people, what the Chinese are saying is a particular type of pneumonia, I don't buy it, because I have known a lot of doctors whom I have spoken to. This strain which they are telling that this is that some R say, I don't know the medical name, it's a type of pneumonia. They have said it can't be, because it is not, it doesn't go viral. It's not contagious. Whereas this one they have found is very highly contagious, and it is 11-12 साल और नीचे के बच्चों को स्ट्राइक कर रहा है. ओके, अब बड़ों को भी आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट स्कूल है सारे बंद हो रहे हैं, उनके प्राइमरी स्कूल्स वगैरह सब बंद हो रहे हैं. सो मच सो, बिकॉज एक बच्चे के पीछे 3 फादर मदर भी आते रहते हैं. Abhi they are thinking, I think it may have started affecting the elders also, adults also, because there is chatter on their social media of return of lockdown. Is that bad in China? और अब की बार स्प्रेड नहीं हुआ क्योंकि बंदे कोई जा नहीं रहे हैं चाइना, आवाजाही कम है. OS Chandran ji, thank you so much for becoming a member. Vignesh Prabhuji, thank you so much. Where Warren Buffett stands in the deep state, he never seen any politico. CC. Your view about the recent NIT Srinagar Warren incident Buffett, is... he runs the hedge fund, yeah.
उसको कोई लेना देना नहीं है, डीप स्टेट को पैसे बना के देना है और उसके पैसे बनना। सो दैट इज व्हाट इज हैथवे ऑल अबाउट वॉरेन बफेट। NIT incident, तो like I say, na, the deep seated your system is deeply ingrained by the leftists and Islamists. That is what is the NIT incident, Srinagar incident all about here. One version which is coming out is actually he has fallen in love with a Muslim girl, and the girl has fallen in love with him, and that's the reason they've got after him with all kinds of stories. And then you have bots to spread in your social media the echo chambers, then that carries value कि इसने ये किया वो किया वो किया. Blasphemy is not there in our blood here. आप किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ बात करते हो, आप केवल बोलते हो कि तुम्हारे रिलीजन में ये बोलता है. गाली वाली कौन बात बकता है? कोई नहीं बकता. किसको फर्क पड़ता है सर? ना काम करो, खत्म करो कहानी. उनके इसमें जो सिखलाई है extreme Islamism which has derived from Wahhabism, that a man can marry outside the Islam, but a woman cannot get along and marry outside Islam. That's the whole. I think that is the nub of the issue there. But there are extreme leftists and Islamists. So I won't know we don't know actually what is correct. All versions are coming around. That's the whole issue. But I think it was a show of force. Yeah. आग जलाई कहाँ से आपको भी पता है. तो दबी गया, वो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि कॉलेज ही बंद कर दिया उन्होंने. हमने कॉलेज ही बंद कर दिया, बच्चों को बोला गो घर जाओ. पाकिस्तान बीट्स इंडिया 38-18 at UNESCO. ये यूनेस्को क्या है सर? Global South may have sided 38-18. I don't know if Global South people were there, who supported, who didn't support. But it is a travesty of justice that Pakistan, which doesn't believe in any other religion or anything else, and children's education or anything, is being permitted to be in UNESCO. Like you have Muslim countries coming on women's panel, yeah, where women have no rights. So that's why I say that तुम्हारा UN ही कचरा हो रखा है, which is why India is saying ना that it has to evolve to current environments. Why is he allowed to come into UNESCO in the first place? मैंने मोहनजोदारो का मैं एक टॉक किया था. अपने बिल्लो रानी ने वहां पे एक फेस्टिवल कराया और मोहनजोदारो के एक्चुअल रूइंस के दीवालों में कील ठोक के वहां पे उन्होंने शामियाने खड़ा कर दिए थे. ये तो हालत है यूनेस्को. तो लेस सेड अबाउट द UN द बेटर. नहीं हुए हमें क्या फर्क पड़ता है. सर जी लेट्स सी. बहुत रिसर्च करनी पड़ती है यार उन चीजों में. Does academia fall in the think tank category in this hierarchy? अब इंस्टीट्यूशंस मैंने लिख के दिए ना तुमको, आईवी लीग वाले, और जितने भी हमारे एफिलिएशंस होते हैं यहाँ पे उन आईवी लीग्स के साथ यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड की इनग्रेन्ड है. JNU में कितना इनग्रेन्ड था, अभी धीरे धीरे वो निकल रहा है. सो दैट इज द होल इशू. Shritik Kothari ji, both Pannu and Amritpal were clean shaven without turban before being recruited. This de facto show that they are fake Sikhs. I've been saying this. Listen, I'm sorry, but Khalistan has nothing to do with Sikhs. They are Sikh people in the head. That's it. कोठारी जी, खालसा पंथ जो बना था was to fight against the problems being created by Aurangzeb. Okay. And the first member of every family in Punjab, even Hindu, first boy, was given voluntarily to the Khalsa Panth. That is how the Khalsa Panth came into being. You have two types, Khalsa Panth and the Sahajdhari Panth. Khalsa Panth is the one which talks of Kanga, Kesh, your Kacha, Kada, Kirpan. Sahajdhari, who follows, it's not necessary for him to follow all this. अब जब सहजदारी खालसा पंथ पे जाएगा तो
कर सकता. When you go into the Khalsa Panth, you do it. The Khalsa Panth is the supposed to be the Kshatriya portion of the Sikhs. They are the Kshatriyas of the Sikhs who fought. So that is why, like, I commanded Khalsa troops. Sir, we have a Khalsa squadron in the Pune house. I commanded those Khalsa troops. It was taboo to cut hair. हाँ, अभी मॉडर्न में वो बियर्ड ट्रिम कर देते हैं, लेकिन पुराने हम तो जब ग्रुप लीडर वगैरह भी थे, वो तो अपना पूरा फिक्सो लेके अपना दाढ़ी वाड़ी सारा यहाँ पे बांध के बाल काटना हराम था यार. बाल नहीं काट सकते. फिक्सो का नाम सुन के पता नहीं मुद्दत होगी सर. मैंने आई यूज्ड टू, वो लड़का अगर कोई शेव करके आ जाए तो उसकी तो पिट्ठू परेड हो जाती थी 1 महीने की. मैं तो पिट्ठू परेड दे देता था उसको. ये साला बाल काट के कैसे आया? उसके बाप को बुला लेते थे कि क्या सिखा रहे हो तुम, खालसा ही है, इसने बाल कैसे काट दिए. बट सहजदारी इज डिफरेंट. सहजदारी Sikhs are different. जी. Nanak ji was not a Khalsa. So, hey, we are dispensable? Yeah. Dispensable in that structure, but you can make yourself indispensable in your own manner, how you want to live. Remember, USA will be hostile to you soon. They don't want a rise of Asia. But did you want the rise of Asia? You wanted only rise of China. If you had joined with everybody else, you could have been rise of Asia. No. But we have not aligned ourselves with totally and say we are allies with the US. We are partners with the US. Ji. Tadani ji says Chinese Middle Kingdom is an attempt to CCP, cut, copy, paste the Chakravarthy Samrat Ashoka Jambudweep into present without the knowledge of Sanskrit. Your view? No. Tadani ji, inka jo concept of Middle Kingdom is quite old. Or it's Tianxia, all under the heaven, Middle Kingdom. It means that anything and everything flows from them only. Martin Jack की एक किताब है When China Rules the World. Please read that. I think page 374 में उनका Middle Kingdom का मैप भी बना हुआ है, where you have the king, the allied royal domain, the allies, barbarian allies, and rest are barbarians. Why? Only those are considered civilized people who follow the Chinese philosophy and the Chinese culture and the way the Chinese have lived. Everything blindly when you follow, then you are their ally, you are a good chap. Otherwise, you are a barbarian. That is not the concept of our Chakravarthy Samrat. Chakravarthy Samrat was there to control and ensure that there was peace in that empire, even in his vassal states, and to maintain the armies and to ensure that he could come there and fight for them. They had to give an annual indemnity. Apart from that, his only thing was you could do any economy, any trade for your benefit. That was not controlled. Under Chinese Tianxia, anything and everything will be controlled by the emperor. And all money will come to China. And depending on the emperor's mood, he will tell how much money is to be given to the others. So, totally different concepts. तो संस्कृत पढ़ भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Concept ही अलग. Humanity's biggest problem is internal dirty. India's biggest problem is internal dirty politics that holds back development. This appeasement politics is killing India's image. That's why we don't talk that on Dev Talks. And that is why we are saying that this is part of India stroke Hindustan. We are shifting towards Bharat. In the West think India is batting for the US and will break up BRICS. They say if India keeps sitting on the fence, economy will collapse. What do they smoke? Your guess is really as good as mine, Partha. What do they smoke? Fentanyl? Kya pata? Something really strong. Ming Wu, this is a Ming Wu, by the way, from Canada. She's actually a real open eyes. I mean, no, not a pun intended, but a real thoughtful Chinese. At least that's what it seems by the comment. India is playing at the long game, seems like. This only means Mr. Modi is confident of another win. Yes, should be. Not India, Ming Wu, Bharat.
You got it wrong. It's Bharat which is playing the long game, not India stroke Hindustan. शुभम अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच सर। आज 3 पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स को अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। गुप्ता जी को अमेरिका ने पकड़ लिया था, अननोन गनमैन ने ईगो पे ले लिया क्या? यार आप तो हमसे भी बड़े आगे हो अग्रवाल जी, आपने तो हमको भी पीछे छोड़ दिया। Vignesh Prabhuji, thank you so much once again. Does Russia have a plan to merge some of its departed republics? As Crown Council goal is money, then why to create disturbance in the world? Okay, Vignesh, there are two different questions. I'll take the second one first. If there's disturbance, there is war. If there's war, who makes the money? MIC. Armament industry. And if there are natural resources in that area, cost of natural resources go up. If there are a lot of agro products from that area which come out to other places, the commodity prices go up. Okay, so who makes the killing? That is how you make your money. And the first part was Russia, I don't think has the capability or the capacity today to absorb its neighboring countries. I don't think so. It has never been its. Yeah. I don't even think they have been having a sphere of influence. Yeah. Asking to give a sphere of influence and conquering those areas and merging with them are two different kettle of fish. Like America still follows his Monroe Doctrine. It has dictated a sphere of influence and doesn't want anybody else in the Pacific. Does that mean it is going to merge the complete Latin American countries with it? No. The chatter which is there is to create a phobia so that people in Europe and all don't start talking to the Russians and then merge Russia with Europe and help it build up, because then in future, if that happens 50 years down the line, the European Union along with Russia will become a very strong entity. Correct, sir. Maitri asks, General sir, first of all, last show was amazing. Thank you. The Myanmar one. Are our corporates in line to be the new deep state? What would our culture's soft power impact would be on the West? Corporate, Maitri ji, why so much flack on Adani? I rest my case. You know, sir, there's a website called Adani Watch, right? Adani Watch is a website made by the Bob Brown Foundation. Bob Brown Foundation is a so-called environmentalist in Australia. Why did he create this website? Because Adani beat him to the coal mines in Australia. All right, so that's how it is. This Bob Brown Foundation gets his money from Trevor Foundation. Trevor Foundation is the front for Ford, Open Society, Omdiyar, and all these guys. So it's the same monkeys all over the place. Soft power is there, yeah. Yeah. You go to US and हमारे Bollywood dance के classes होते हैं वहाँ पे, and a whole lot of these white girls and all come and dance. Yeah. And learn Bollywood dancing. I'm not talking of traditional dance. वो भरतनाट्यम, कथक वगैरह के भी classes होते हैं, they come. I'm talking of Bollywood dance, yeah. It's become a separate dance form. Cyberpunk, that's a funny one. Adani Watch, where he sell watches competing with Tata and Titan watches. That's a good one. Everybody's become like us, sir. Trust you me, you and I got to be responsible for spoiling a lot of people. That's a basketball का मैं बोलूँगा. That's a 3-pounder possession and one free shot and then possession. Yeah. Do you think that RBI CBDC is the start of a social credit system or something similar system in the country? No, we don't have any social credit system. That's the problem. Credit system, these are more to so that the banks can understand whether you are good enough to give a loan or not. It's not a social credit system. अभी तो open sources में भी आने लगे हैं, so the banks are saying नहीं open उसमें मत जाओ.
You have paisa.com and all, which gives you your credit score. Banks have also started, which gives you a credit score. That credit score has not got anything to do with social credit system. It is your value to be able to give. So the bank can decide from all that to tell you whether you are financially capable enough to take the size of loan that you are asking. Because Yeah. वो इसका EMI पे करना पड़ता है. आप में काबिलियत है, वो EMI काबिलियत क्या देख रहे हैं कि to run your house and pay the EMI. It's that. And then they tell you कि नहीं, इतना नहीं, हम इतना दे देंगे. Captain Tavish, he asks, General Sir, Russia is again building assets like the aircraft carrier it cannot afford. Haven't the Russians learned lessons from the disintegration of the USSR? Disintegration हो गया, but see, my own personal view, USSR was a colony by Russia. Simple and straight. जो रशियन सोवियत रिपब्लिक था ना, उसका कॉलोनी था. एंड सारे जो वेस्ट ऑफ, और रादर आई वुड से a lot of them which were west of Urals. The east of Urals, there were only a few patches of republics जहाँ पे कुछ factories उन्होंने दिए थे, critical factories. Now aircraft carrier तो चाहिए ना यार, अगर आर्कटिक को डोमिनेट करना है, पैसिफिक फ्लीट को पैसिफिक में डोमिनेट करना है, अटलांटिक में जाना है उसने, he has to come into the Mediterranean. एयरक्राफ्ट कैरियर के बगैर कैसे माने कर पाएगा आज की तारीख में? बेसिस तो भी है नहीं, एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल एशिया where he's got his aircrafts and other things. Central Asia is landlocked. So he needs. Now, whether he can afford it or not, he knows it well. Yeah. I won't comment on that, but he needs that. उसके बगैर तो he is nothing. और अभी तेल में तो काफी पैसे बना लिए उसने यार. A lot of people asking Melody, why? See, look at a very geostrategic significance of this. And sir, if I'm wrong, Meloni wants to be the strong person in Europe. India is a strong country here. So she says, यार अगर मैं इसके साथ खड़ी हो जाऊं, कहीं ना कहीं मेरे को भी थोड़ा दम मिल जाएगा. दूसरा, she has to earn money. Italy is really out of money. ठीक है. If you get money, the only place that can actually get you permanent, not loan, a trade-based money is Bharat. So that's why she knows which side the grass is green. Yeah, simple as that. I mean, and both of the leaders have a fantastic rapport with each other. There's nothing. I mean, it's brilliant actually. And remember, Italy, if you look at the map, it's surrounded by ports all through the entire area. It's got fully functional, fully ready for trade ports. So it's a big thing for us also, as a matter of fact. And last one, sir, Sagarji, thank you so much. Pranams to Guruji. Shukriya. Thank you so much, sir. As usual, maza aa gaya. Okay, I think a lot of the guys are going to be after us, so I think you and I should not go out today in the evening anywhere. ठीक है. वो डीप स्टेट से डीपर स्टेट से बाहर निकलेंगे. कोई बात नहीं. समझना चाहिए. जब मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट फ्लिकर है, ये मतलब ये नहीं कि अगले साल खत्म हो जाएगा. We are talking of the flickering of countries and people who have been in power and relevance for 5 to 6 decades. They are flickering out. And so it will take at least about 10-15 years for things to stabilize. तो ये छोटे छोटे जो पिन प्रिक्स आएंगे ना, पन्नून, निज्जर, निखिल गुप्ता, ये इस तरह से आते रहेंगे. आप सॉल्व करते जाओगे, और जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे, जो लोग इस स्केलेटन्स, इस कबर्ड से निकलेंगे इस चीज के साथ, वो भी सॉर्ट आउट होते जाएंगे. निकालने के लिए बहुत हैं. So it's not going to be an overnight shift. When I talk of the new global order, I am not talking today, 2050, हमारे 100th anniversary and going beyond that. That is the time the global order I feel would get stabilized. The evolving global order.
सो I इसीलिए I मैं must हर say, बार sir, कहता हूं कि मैं आम के पेड़ के बीज बो रहा हूं, जो आम खाएंगे वो शायद आपके बच्चे होंगे, हाँ, क्योंकि ये भी absolutely, sir. आम का पेड़ नेशंस के जैसे बढ़ेगा, तो आपके बच्चे होंगे, शायद आपको शायद मौका मिल जाए या आपके बच्चों को मौका मिले जो सुन रहे हैं। मुझे तो पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ऊपर वाले की दया होगी तो मिल जाएगा, because I am not getting any younger by the day, but these are things that you need to tell। ये हमने सीखा है अपने टाइम में, जी, हमारे बड़ों से हमने सीखा है, जो हम पास ऑन कर रहे हैं आप। थैंक यू sir, thank you so much. Guys, जाने से पहले प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को. It's always fantastic afternoon spent, trust you me. मजा आ जाता है सर. To opens the head for and prepares you for the next week. So thanks so much, sir, and see you next थैंक week. यू Jai थैंक Hind, sir. यू